Hello, my dear students. Welcome back to the video lecture in which we were discussing Unit 9, that is Nested Loop. This video is basically the part 2 and lecture number 23 of Computer Applications with BlueJ class 10th. Okay, the theory part of this chapter we have already discussed in our lecture number 22. Now we are going to discuss some of the sample questions. Those are from your book as well as the exercise portion for the same. Okay, so let us start with a sample question. In your book, you are having program number 4. See, open the page number. Let me tell you the page number. It is basically page number 126 it is. Okay, so what you have to do, write a program to display 20 simultaneous prime numbers starting from a given number entered by the user. ओके आपको क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है. ओके एंड देन उस नंबर से स्टार्ट होते हुए आपको 20 साइमल्टेनियस प्राइम नंबर्स चेक करने हैं. ओके सो टू थिंग्स वी हैव टू डू. व्हाट फर्स्टली वी हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. ओके अगर है देन ओके, अदरवाइज आपको क्या करना है, उसी तरह के आपको 20 बार वो लूप को अपना एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल चेक जो आप नंबर यहाँ पर एंटर कर रहे हो वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. अगर ये प्राइम नंबर होता है तो आगे के 19 प्राइम नंबर वी विल फाइंड आउट. अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता है तो आगे के 20 प्राइम नंबर्स वी विल फाइंड आउट. ओके, आई होप द ओवरऑल रफ आइडिया इज क्लियर. नाउ सी द कोड. Public class 20 prime, it is a class, it is your void main. Okay, it is a scanner class in we have made as an object, okay, for taking your input. Now these a b c and these are all your variables. We will see furthermore why we are using these variables and all. Okay, now see system out println, enter the first number. Over here you are going to take the first number and you are going to store it in n. ओके सो दिस n इज़ यूज फॉर स्टोरिंग योर फर्स्ट नंबर फ्रॉम वेयर आपको ये चेक करना स्टार्ट करना है, फ्रॉम वेयर आपको आगे की 20 प्राइम नंबर्स फेच आउट करने हैं. ओके सो ओवर हेयर 20 प्राइम नंबर्स फ्रॉम n आर. नाउ सी वी आर यूजिंग ओवर हेयर डू वाइल लूप. ओके वाई वी आर यूजिंग डू वाइल लूप, बिकॉज वी डोंट नो कि आपको कितने आगे तक नंबर्स को लेकर जाना है. ओके नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें एग्जाम्पल में देखा है आपका नंबर 8 है. ओके देन आफ्टरवर्ड्स यू विल चेक इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. नो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. देन आप नेक्स्ट नंबर चेक करोगे, दैट इज़ योर 9. इट इज़ अगेन नॉट अ प्राइम नंबर. अगेन यू विल चेक फॉर 10. इट इज़ अगेन नॉट अ प्राइम नंबर. ओके देन यू विल चेक फॉर 11. येस इट इज़ अ प्राइम नंबर. सो लाइक दिस वी आर नॉट हैविंग एनी एग्जैक्ट आइडिया कि आपको कितना आगे प्रोसीड करना है. दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट फिक्स्ड ओवर हेयर. तो जहाँ पर आपका नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं होते हैं, वी आर यूजिंग आइदर अ वाइल लूप एंड अ डू वाइल लूप. ओके सो फॉर लूप तो यहाँ से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो ही गया कि फॉर लूप हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे. अब बात आती है कि वेदर टू यूज़ ओवर हेयर वाइल लूप और डू वाइल लूप. ओके नाउ वी आर हैविंग वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप. ओके वो क्या होता है, वो ये होता है कि इन डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम अवर कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है, अगर आपकी ये मेन कंडीशन फॉल्स भी होती है, देन ऑल्सो आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप होती है वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है. बट दैट इज़ नॉट द केस विद वाइल ना. सो ओवर हियर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली वी आर टेकिंग n एज एन इनपुट. हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका ये n प्राइम है या नहीं है. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ओवर हेयर डू वाइल लूप. ओके नाउ सी this condition is obviously understood that we have to take 20 prime number. That is why we are using k less than equals to 20. Okay, and k is the variable that we have initialized at 1. Okay, k we have initialized as 1 because over here 1 to 20 आपको अपने प्राइम नंबर्स काउंट करने के लिए आप k को यूज़ करेंगे. नाउ सी ओवर हेयर वी आर हैविंग c इक्वल्स टू 0 एंड दिस लूप a equals to 1. A is running from 1 till n. Remember n is the number that you have taken as an input. In this case, in this example, we have taken 8 as an input. Okay, so from 1 till 8 आपका loop execute होगा, आपका loop run होता रहेगा बार बार. Okay, and then what you are going to do, you are going to check whether this n is divisible by your a or not. Now remember over here we are checking our prime number. Yes,
सी माई डियर स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग मैनी कॉन्सेप्ट्स जिससे आप अपने प्राइम नंबर्स को चेक कर सकते हैं. इन द प्रीवियस प्रोग्राम्स वी हैव डन समथिंग लाइक दिस. a equals to 3, a should be less than equals to n divided by 2 and a plus plus. ओके, सो आपके पास मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं जिससे आप अपने नंबर्स को प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक कर सकते हैं. ओवर हियर वी आर यूजिंग अ लूप जिसमें आप 1 से n तक अपना लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आर द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आर दोज जो सिर्फ 1 से या फिर अपने नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं. एंड ओवर हियर वी आर चेकिंग व्हाट इफ़ योर n इज डिविजिबल बाय a completely or not. So if your n is a prime number then it will be divisible by 1 as well as by n. So over here जब आपका c 0 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार एग्जीक्यूट होगा तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी लास्ट में. yes, in case your n is a prime number तो आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना. so that is why over here we are checking if your c equals to 2 then it means आपका n prime number है. so over here we are checking system.out.println it is n. yes, it means here you are having your prime number over here and k has been incremented to 1. okay, it means over here 1 2 3 up till 20 prime number we have to find out. This one position is already fixed over here. Now we are checking from for second position. okay, now after this loop, after this if condition, we are having n equals to n plus 1. Our value has got incremented. Now see, let us try to execute this loop. Over here we are having what, we have taken n equals to 8. now a value is over here, yes, and c value is over here, and let us assume we are having k over here. ओके, नाउ आपको क्या करना है, फ्रॉम हेयर यू सी ओवर हेयर, सी आपकी वैल्यू 0 है. यस, वी आर हैविंग a इक्वल्स टू 1 एंड a इज गोइंग टू रन टिल 8. ओके, सो इफ n mod a equal to 0 it means if your 8 mod 1 equals to 0 condition is true. yes, so c will got incremented to 1. getting, now again when the value of a becomes 2 what will happen, again it will check 8 mod 2 equal to 0, the condition is again 2. now the value of c will again got incremented, it becomes 2. now for 3 it is not true, for 4 again it is true, 8 mod 4 equals to 0, so it again got incremented, it becomes 2, your 3. now when the value of a becomes 5 then again 8 mod 5 is not equal to 0. again for the value of 6 it is not possible, it is going to execute till n. so n we are having as an 8, so at the last if it is going to execute 8 mod 8 equals to 0 then again the c value will got incremented now, so it becomes now 4. okay, so the last value of c is what, it is 4. yes, so over here we are going to check if c equals to 2, that is not true now because our c's value is what, it is 4. yes, so we are not having this k equals to k plus 1, आपकी k की वैल्यू इंक्रीज भी नहीं होगी एंड दिस इज नॉट योर प्राइम नंबर. ओके, बट द वैल्यू ऑफ n विल गॉट इंक्रीमेंटेड. ओके, सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपका 8 से जब आपने स्टार्ट किया था, सो द नेक्स्ट नंबर दैट वी आर गोइंग टू चेक इज व्हाट, इट इज 9. for 9 we are again going to execute our the same condition. see over here we are having again c as 0. again this a loop will run from 1 till 9. okay, the c value is what, when n mod 1 equals to 0 condition true, c value become 1. for 2 it is not true, for 3 again it is true, 9 mod 3 equals to 0, it becomes what, it becomes 2. now for 4 it is not possible, for 5 again it is not possible, for 6 not possible, 7 8 again, for 9 it is possible now, so again it got incremented, it becomes what, it becomes 3. yes, now over here it is again going to check c equals to 2, it is not again true, सो आपका 9 भी प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर और आपका ये भी काउंट नहीं होगा. ओके, तो रिमेंबर आपका n इंक्रीमेंट हो रहा है बट आपका k इंक्रीमेंट नहीं हो रहा. ओके, सो k क्या आपका पॉइंट कर रहा है, k पॉइंट कर रहा है आपके प्राइम नंबर्स को, एंड n बेसिकली क्या पॉइंट कर रहा है, n आपका काउंट बढ़ा रहा है एक एक करके फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड. ओके, सो अगेन ये आपका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, टिल नाउ हमारे पास एक भी प्राइम नंबर नहीं है, बट अगेन दिस स्टेटमेंट विल गॉट एग्जीक्यूट और आपका n की वैल्यू जो 9 थी वो आपकी n की वैल्यू अब हो जाएगी 10. नाउ अगेन फॉर 10 वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, सो अगेन द वैल्यू ऑफ n विल गॉट इंक्रीमेंटेड, इट बिकम्स 11. फॉर 11 इट इज़ गोइंग टू चेक. ओके, सो जब 11 के लिए आप ये एग्जीक्यूट करेंगे योर वैल्यू ऑफ c बिकम्स 2.
Yes, now again if this condition is executed, it is true, so you will be getting 11 as an output, and space you will be getting. Okay, and the value of k will be 2 now. Okay, so for now you are checking for second prime number. The first prime number you have already got it. Okay, I hope the code is clear, and this loop will continue, this do loop will continue until this while condition becomes false. जब तक आपका k की वैल्यू 20 या उससे बड़ी नहीं हो जाती, k की वैल्यू 20 से बड़ी नहीं हो जाती स्पेसिफिकली, तब तक आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा. Okay, see, this code is very important. Now see the next one, program number 7. Basically program number 7 is on page number 129. Okay, now see what we have to do. Write a program to display the Floyd's triangle. This question is very popular again for your board kind of purpose. Okay, Floyd's triangle. See over here we are having what? 1, 2, 3. No, let us zoom it out. This thing. Okay, so यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करते हैं. What it is? Firstly, a straight triangle. Yes, and what you have to do? You have to apply two loops. Yes, one commonly we are starting for I, and the second one we are starting for j. Okay, so I आपका जो होता है वो इस चीज़ के लिए लगता है, and j जो आपका होता है वो इस चीज़ के लिए लगता है. Now one thing you please focus over here is that फ्लोइस ट्राइंगल में आपकी जो वैल्यू होती है, हर एक वैल्यू इंक्रीज होती रहती है एक एक बारी में. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो एनी हाउ आप आई की और जे की वैल्यू तो प्रिंट नहीं कराएंगे. Yes, so for I, what we are going to do, we are going to check how many rows we are going to need it out over here. Okay, see basically for Floyd's triangle it depends on the question कि आपको कितनी रोज चाहिए होती हैं. It may also happen कि आपका Floyd's triangle सिर्फ इतना ही आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए दे दे. ओके, या फिर इट मे हैपन कि आपकी एक रो और इसमें इंक्रीज कर दे. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एज वेल एज ऑन द सिचुएशन कि आपको कैसा फ्लोइड्स ट्राइंगल मिला हुआ है. बट बेसिकली बाय दिस फ्लोइड्स ट्राइंगल वी मीन्स व्हाट कि आपकी हर एक वैल्यू पर एक बारी आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ओके, सो नाउ लेट अस चेक फॉर द वैल्यू ऑफ आई एज वेल एज फॉर द वैल्यू ऑफ जे. See, we are having what? We are having 5 rows over here. So if we are running our loop I from 1 till 5. Now let us try to execute our j loop. Okay, so we are going to see कि आपकी j loop की वैल्यू कैसे कैसे एग्जीक्यूट होनी है. ओके, सो I की वैल्यू 1 के लिए ये रो है, I की 2 के लिए this is 1 3 and this is for 4 and this is for your 5. So for j, if you are going to start j from 1, okay, now till when you have to stop this j. Okay, it is a very common problem that when you are dealing with your upper half triangle, okay, it is basically your upper half triangle, straight triangle, then you are running your loop from j equals to 1 till j equals to a. Okay, आप क्या करते हैं, 1 से लेकर a तक करते हैं, because over here the number of I is equal to the number of j. Okay, over here see, it is the first row and we are having only one column. Yes, it is the second row and we are having two columns. It is the third row and we are having the three columns, and so on. So before writing your loops, you please try to make a rough figure, as well as you please try to uh, make this thing एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट कि आपका आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए, एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम रफली. अगर आपका कोड ठीक आता है देन आफ्टरवर्ड्स यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इन अ होल फुल फ्लेज प्रोग्राम. ओके, सो ओवर हियर यू सी आई की वैल्यू आपने यहाँ सेट कर ली है, जे की वैल्यू भी सेट कर लिया, बट ओवर हियर आवर वैल्यू, आवर एक्चुअल वैल्यू इज सम हाउ डिफरेंट, जो कि आपकी ना कि आई से मैच करती है ना कि जे से मैच करती है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, we can take another variable. Either you can take p or j or a b c d, it depends on you, it is your choice. Okay, so we are starting p equals to 1, and after everything, after every loop, what we are going to do, we are incrementing the value of p by 1. ओके, सो इससे क्या होगा, आपकी p की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक आपके ये i और j लूप्स चलेंगे. ओके, आई होप दैट यू आर हैविंग अ रफ आइडिया फॉर द सेम. नाउ सी public class pattern we are having, it is your main class. Yes, a b p p we are having a for your rows and b for your columns. Okay, so we are running a equals to 1 till 5 because we are having our 5 rows. Yes, b we are running from 1 till a because we are having the upper triangle. So जितनी आपकी number of रोज हैं, जितना काउंट आपका रो का होगा उतना ही आपका कॉलम का होगा. दैट इज़ वाई वी आर रनिंग बी फ्रॉम 1 till
a. Okay, and now we have taken p equals to p plus 1. Over here you have taken p equals to 0 ना. So जब आप यहाँ पर 0 लेते हैं तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में you have to increase the value and then afterwards you please print this value out. ओके, तो जब आप ये प्रिंट कर देंगे फॉर एवरी रो, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस चीज़ का, कि यू आर हैविंग दिस प्रिंट ओनली, नॉट प्रिंट एल एन. ओके, यू प्लीज़ फोकस इट ओवर हियर कि यहाँ पर आप एल एन को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंट को यूज़ करेंगे. यस, एंड योर एवरी टाइम पी की वैल्यू इंक्रीज होकर आपकी प्रिंट होती रहेगी. एंड एट द वेरी लास्ट व्हेन यू आर डन विद योर कॉलम पोर्शन बेसिकली, तो आपका ये एक न्यू लाइन यहाँ पर एंटर हो जाएगी. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू execute this program. See over here we are having the value of a, we are having the value of j, b, and we are having p over here. And over here let us see we are having our output. Okay, so we are starting a from 1. Okay, the condition is true. B is going to start from 1. Okay, so again this p equals to p plus 1, we have the value of p was 0. Now it becomes what? It becomes 1, and we are having this line, so 1 will be printed out over here with her space. Okay, so space I am giving by this underscore line. Now again the value of b got incremented, it becomes true, the condition becomes false, and it comes out of the loop. You will be getting this print ln line, so your cursor is now in the next line. Okay, now we are having a equals to 2, but our b is going to start from 1 again. Okay, so again we are having p equals to p plus 1, the value of p was 1, now it becomes true, and now it is going to print it out over here with a space. Okay, now b's value becomes true, again the value of p will got incremented, it becomes 3 now, again it is going to be executed, and it is going to be printed out over here with a space. Okay, again the value of b will got incremented, the condition becomes false, it will come out of the loop, and this print ln will got executed, and you are now in the third row. Okay, now for a equals to 3, again we are running our loop from 1 till n. So you are getting the point. Every time आपकी जो value है वो increase होती रहेगी p की, and you will be getting this kind of output. Okay, so please focus over here कि how many columns and how many rows you need, accordingly you please set your for loops. Okay, so I hope the code is clear. Now see another program on the same page, program number 8. Okay, over here what you have to do, you are having बेसिकली इन्वर्टेड ट्राइंगल. यस, जब आपकी इन्वर्टेड ट्राइंगल होती है तो हम आई का बेसिकली जो लूप होता है वो यूजुअली अपोजिट लगाते हैं. ठीक है, बिकॉज इन द फर्स्ट रो यू आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ योर columns, and in the last row, in the last value of I, you are having minimum number of columns. Okay, so that is why we are running our loop, basically loop for your rows in the opposite direction, in the backward direction. Okay, now see over here, focus on this pattern. We are having 1 2 3 4 rows we are having, but what about the columns? We are having 1 2 3 4 5 6 7 columns we are having. Okay, so if I am going to run this loop, see over here, now if I am going to run this loop, our i's value from 4 to 1. Okay, now this condition will not be satisfied by now. Yes, so what we have to do, what we have to run our j loop from 7 till 1. Now see over here, when your i's value becomes 4, j value becomes 7. Okay, again where you are having what, when you are having our I equals to 3, again you will be getting this minus minus, you will not be getting the desired result. Okay, now one thing very common, you please focus over here, is that जब आपके columns की सारी values अलग अलग होती हैं, so usually you print j loop. ओके, जे की वैल्यू आप प्रिंट करते हैं जब आपकी वैल्यू सारी अलग अलग होती हैं. ओके, एंड व्हेन योर वैल्यू इज कॉमन, लाइक वाइज यू आर हैविंग 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड सो ऑन. सो आप इस केस में आपकी आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द केसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द केसेस. मेजॉरिटी में आपका ये होता है कि जो आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ अगर डिफरेंट होती हैं, सो यू आर प्रिंटिंग योर जे वैल्यू, एंड इफ़ आपकी अगर कॉलम्स की वैल्यू कॉमन होती हैं, सेम होती हैं, देन यू आर गोइंग टू प्रिंट योर आई वैल्यू. ओके, दिस इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स बट नॉट फॉर ऑल द पैटर्न्स. ओके, सो नाउ ओवर हियर सी आपकी यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, एंड यू आर हैविंग दिस जे लूप फ्रॉम 1 till 7, अगेन 1 till 5, अगेन 1 till 3, अगेन 1. सो ओवर हियर अगर आप अपना आई लूप को स्टार्ट कर देते हो 7 से एंड 1 तक करते हो तो आपकी 7 रोज आ जाएंगी, बट वी डू नॉट वांट दैट. यस, सो आप क्या करोगे, आई की वैल्यू को आई माइनस 2 कर दोगे. यस, एंड अबाउट जे व्हाट यू हैव टू डू, जे आप स्टार्ट कर दो अपने आई से.
ओके, स्टार्ट कर दो आई से एंड एंड कहाँ तक करो, एंड कर दो आप इसको, सॉरी, स्टार्ट करो आप इसको आई से 1 से, बिकॉज फ्रॉम 1 यू हैव टू स्टार्ट इट आउट ना, एंड एंड कर दो इसको आई पर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगर आपकी फर्स्ट रो में 7 वैल्यूज़ हैं, ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू में क्या होंगी आपकी, यहाँ पर 5 वैल्यूज़ होंगी। ओके, सो जे जब आप प्रिंट करेंगे, सो फॉर द फर्स्ट रो यू विल बी गेटिंग 1 till 7 एंड फॉर द नेक्स्ट रो यू विल बी गेटिंग 1 till 5, again for the third row you will be getting accordingly the answers. Okay, now see the code. Class main, over here we have taken I for your rows, j for your columns. Okay, so I equals to 7, I greater than equal to 1, I minus 2, again the same thing for j, and you are going to print it out, j is over here. Now my dear students, one thing to focus over here is that in the previous video also I have given you one sample question, yes, to solve, and you have to find out, basically that was the chapter number 8, in which the output program I have given you as a homework. Yes, so over there you are having the while loop, over here you are having the while loop, and some statements over there you are also having. I have told you many times that if you are not having curly bracket after any loop, then you assume that only one statement is there in the while loop. ओके, आपको हमेशा ये टू एंड फ्रो मोशन में आपको अपने कोड नहीं मिलेंगे, बेसिकली यू आर गेटिंग द कोड इन दिस फॉर्मेट, इन द स्ट्रेट फॉर्मेट। ओके, सो जब आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, देन प्लीज़ एज्यूम दैट कि सिर्फ आपका ये सिर्फ एक ही लाइन आपके कोड में है, नेक्स्ट लाइन्स आपकी जो हैं वो आपके लूप से बाहर कंटेन करती हैं, दोज लाइन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर वाइल लूप और फॉर लूप और डू वाइल लूप। ओके, सो ओवर हियर ऑल्सो we are having only this statement inside for loop, and this statement is outside your j loop. Okay, so accordingly you will be getting the answer. Now I hope that your this code is clear and you understood the code. Now moving forward, see, this is a sample program number 2. It is on the page number 132 basically. Okay, one thing to notice over here in this program is that you are having the numbers as well as you are having some characters over here. Now you please focus over here in the first, this diagonal. Okay, this triangle you are having the numbers, and these triangles you are having what, you are having your characters. Now again we have to merge both the things. Yes, for this we are having our code, and for this also we are having our code. Okay, you know how to convert your ASCII value into your character and your character into your ASCII value. The same concept we are going to apply it over here also. Now see the code over here, we are having bundles of variables over here. Okay, so the pattern is from here we are going to start our logic basically. Okay, we are having a equals to 1 till 5. Why? Because 1 2 3 4 5 rows we are having. Okay, b from 1 till a, basically for b we are running our this loop. Okay, this pattern we are focusing on regarding this b loop. Okay, from 1 till a it is going to print out your a. Again remember the same thing that I have told you, what, अगर आपके यहाँ पर कॉमन सी वैल्यूज़ आती हैं, then usually you prefer to print what, you prefer to print the value of i और the value of a, जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, अगर आपके यहाँ पर सब डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, देन यू प्रेफर टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे और द वैल्यू ऑफ बी, जो भी आप अपनी कॉलम्स के लिए प्रिंट करते हो। ओके, सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू प्रिंट इट आउट व्हाट, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट आउट ए ओवर हियर। सो यहाँ से आपको 1 2 2 3 3 4 4 मिलता रहेगा। ओके, नाउ सी ओवर हियर फॉर दिस सी लूप, सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम के। नाउ सी द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, इट इज़ 5. नाउ व्हाई इट इज़ 5, it is 5 because again the same rule we are having over here, it is you are having this character values in this portion. Okay, and see over here we are having 1 2 3 4 5 values of a in the first row. This b and c we are running for the columns, and this a we are running for what, for running for our rows. ओके, सो आपने b तो आपके नंबर्स के लिए कैलकुलेट कर लिया है, बट c ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर कैरेक्टर्स. सो c a आपका 5 टाइम्स है, दैट इज व्हाई वी आर रनिंग अवर c लूप फ्रॉम 5. Okay, till 1, and c minus minus we are doing it over here. Now again over here on the upper portion, focus it over here, we are having p equals to 65. Now why 65? Because over here we need a.
Yes, we need capital A, and the ASCII value of capital A is what? It is 65. That is why over here, see, we are doing explicit type conversion. Yes, we are converting integer to character. So the value of P is 65 and the character appropriately is capital A. So that is why capital A is going to be printed out 5 times. Okay, but after this for loop it is going to execute. Yes, when this code is done, then k equals to k minus 1, because over here see ये आपका backward loop चल रहा है and ये आपका forward loop चल रहा है. So you are doing what? You are going to do k minus 1 and p plus 1. Why p plus 1? Because p आपका ASCII value को hold कर रहा है and in the second row you are going to print it out the value of b. So you need what? You need 66 now. Okay, and 66 is what? 65 plus 1. That is why you are incrementing the value of p but decrementing the value of k over here. I hope the code is clear. Yes, so you have to break this thing into two parts when you got such a questions. Okay, now let us start our exercise portion. Basically, open your page number 135 from your book and see it over here. The first part we are having, write whether the following statements are true or false. Okay, see the first one. Nested loop contains a single loop. Clearly the statement is false. What is a nested loop? When we are having a loop inside another loop, then it is basically a nested loop. Okay, now see the second one. When break statement is applied, it terminates the loop. Yes, it terminates the loop. It is true. Termination means what? आपकी जितने भी आगे के iterations हैं, it is not going to execute any of the iteration for now. It is just going to terminate your loop and come out from it. Okay, see the third one. The outer loop follows next iteration when iterations of inner loop is over. Yes, this statement is completely true. Why? Because in the previous examples also what we have seen कि आपका एक iteration from the outer loop will give the overall iteration for the inner loop. Okay, so जब आपका inner loop की सारी iterations complete हो जाती हैं, then only you move towards your next value of outer loop. Okay, and again the same thing, the third point is the same. Okay, so that is why your answer is true over here. Now see the fourth one. Nested loop means the using of two or more loops in a program. See, this fourth part is halfway right. Okay, nested loop means when you are using one or more loop inside another loop. Okay, you can use one or two loops in a program. You can use it individually also, you can merge it also, because so this basically statement is not making any complete sense. So that is why this basically line is your false. Okay, see the fifth one, labeled break statement allows the next iteration of the loop from any place of looping structure. Basically labeled break जब आपका use होता है, then for the next iteration you are not jumping out, you are coming out of the loop. Okay, next iteration पर आप सिर्फ continue से move करते हैं, not by labeled break. So again this statement is your false statement. Okay, see the sixth one, the last one. In a nested loop, break and continue can be used simultaneously. Okay, simultaneously means what? One after the another. It is clearly false. Okay, simultaneously you are using means what? Either you are using break continue like this or you are using continue break like this. लेकिन remember जब आप break use करते हैं तो individual ultimately it comes out of the loop. तो continue तो आपका use नहीं होगा यहाँ पर, and continue when you use then at the same time it moves for the next iteration leaving all the below iterations. So यहाँ पर break execute नहीं होगा. Okay, so that is why this statement is what? It is false. Now match your answer. The first one is false, the second one is true, the third one is again true, the fourth one is false, fifth one is also false, and the sixth one is also false. Okay, now see the second part, fill in the blanks. Basically the first one, dash break is used to terminate an outer loop. Okay, outer loop को आपका कौन terminate करता है? You have to write down labeled loop. Okay, labeled loop आपका outer loop को terminate करता है. See the second one, a loop within another loop is called, the answer is nested loop. Now take a pencil and write down in your book itself. Okay, see the third one, termination of dash loop takes place before dash loop. Termination of basically inner loop take place before the outer loop. Okay, because for every iteration आपका inner loop complete iteration देता है, that is why. Yes, see the fourth one, dash statement will repeat a loop for the next iteration after ignoring some statements of the loop.
Clearly the answer is what? It is continue. Okay, the last one, fifth one, dash statement terminates a switch case statement as well as a loop. Clearly the answer is your break, because you can use break in switch case statement as well as in loop. Okay, so check your answer. First one is labeled, second one nested loop, third one inner outer, fourth one continue, and fifth one is your break. Okay, now see, we are having answered the following questions. Now see the first one, question number 1. See my dear students, you have to write down the answers in your copy itself. Okay, so question number 1 we are having, what is a nested loop? See the answer. When a loop is contained inside another loop, it is termed as your nested loop. See the question number 2, write down the syntax of nested for loop. Now write down, nested for loop means what? Means one loop contained inside another loop. Okay, so you are having this as an outer loop and this as an inner loop. Now my dear students, over here it has written that this, there we are having a for loop, and over here I have opened the bracket. Okay, you can also write down it like this for loop over here, initialization and all these things you write it by yourself. Over here you please open and close the bracket, and now for loop, then again all the things you write it down by yourself. Over here again bracket, and over here this statements. Okay, either you write down this thing or you write down this thing, both the things are clear. But if you are following this pattern, then complete this thing over here. Okay, initialization phase, test condition and updation value, you complete it by yourself. Okay, moving on to the question number 3, what action will you take to terminate an outer loop from the block of an inner loop? जब आप inner loop से outer loop को break करते हैं और terminate करते हैं, then what you are using? You are using basically a labeled break statement. Okay, so see the answer. An outer loop can be terminated from the block of an inner loop by using labeled break statement as shown in the below example. My dear students, whenever you are writing any theory part, it is always better to provide an example. Okay, because example provides a way that it tells your teacher that exactly you know the answer. Okay, the answer is not completely clear with your theoretical portion, but it is very clear with your example. Now please don't do things like this कि आपने अपना theoretical portion ही छोड़ दिया and you have written only the example. That is also not true. That should not be done. Okay, if you have been asked things like this, then try to include one example as an extra part. Okay, don't make that example as a necessary part over here. Now see over here, this is an example. Okay, you please try to copy this thing out in your copy, and in case you are having any problem, then let me know in the comment section below. I will explain it to you again. Now see the question number 4, give two difference between break and continue. See over here, the first one, it is used to unconditionally jump out of the loop. Okay, leaving all the iterations, आगे की सारी iterations it leaves, and the continue, it is used to unconditionally jump to the next iteration of the loop, skipping the remaining statement of the current iteration. Okay, ये क्या करता है आपका? It usually move on to the next iteration. Okay, but break, what it does, it jumps out of the loop. Okay, it leaves all the iterations. Now see the second one, it is used in switch case and loops, it is used only in loops. Okay, so these two differences, you please write it down over here. And yes, one thing more, my dear students, if you don't know the two examples, please don't do things like this कि आपने एक साइड break लिखा है, एक साइड continue लिखा है, only one example, only one definition you have written for break and continue, and for the second difference you just include this example. Okay, I am not going to give you the complete marks if you did like this. Okay, examples are a plus point बट नॉट अ मैंडेटरी पॉइंट. जब आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आप डिफरेंसेस आप बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन में देते हैं. यू कैन इंक्लूड वन एग्जाम्पल ऑल्सो ओवर हेयर, बट दैट शुड बी एन एड ऑन पॉइंट, नॉट द मैंडेटरी पॉइंट. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, what is significance of break outer and continue outer in a nested loop? See the answer. Break outer will terminate the loop that is labeled as outer in the nested loop and transfer the program control to the statement just after the loop labeled as outer. Okay, break outer आपका क्या करता है? It is basically a kind of your labeled loop. Yes, it is a label outer. तो ये outer आपका basically बाहर वाले loop की में present होता है, and from inner loop if you are calling this thing out, then directly आपका break क्या करता है? इस outer loop को break कर देता है. ओके, यूजुअली नॉर्मली क्या होता है जब आप ब्रेक यूज़ करते हैं, यू विल बी कमिंग ओवर हेयर ओनली, बट जब आप ब्रेक आउटर यूज़ करते हैं, यू आर कमिंग ओवर हेयर.
you are jumping on 2 steps. Okay, and regarding the continue आपका क्या करता है, it only skips the next iteration, and जहाँ पर आपका outer मिलेगा it starts from this over here, but for the next value, for the next iteration it is going to run the loop. Okay, so this is basically the significance of break outer and continue outer. Now see the question number 6. Write down the construct or syntax of nested do while loop. Nested do while means you are having do while loop inside another do while loop. Okay, so that is what you have to mention over here. This is basically your answer for the same. Okay, now see the B part. Nested while loop, one while loop inside another while loop. Okay, I hope the picture is clear to you. See over here, this is the answer for this second one. Okay, so for the construct, for the syntax, you please write down this thing. Don't just give simply an example for the same. If you have been asked about the syntax, then you have to write a common thing, not a particular thing. Okay, commonly आपको लिखना होता है यहाँ पर, not just an example, you have to mention it. Okay, so first part, second part and third part for the exercise portion we have already completed. Regarding your fourth part, okay, regarding your unsolved programs, we are going to continue in our next video. Okay, so most probably I will be uploading the video in the evening part, so you please focus on and please see the video regarding the questions. Okay, and we are also going to discuss about your holiday homework. As you know that in the month of June you will be having your summer holidays, so I will be giving you some questions and you have to do those questions, and all the queries and mm, all those directions I will be giving you in that video only. Okay, so in the evening I will be uploading your unsolved programs part. So this is for this video. Thank you so much.